Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well. Hope all of you are hale and hearty. In this video children, we are going to cover up class 10th Information Technology, subject code 402, subject skills, unit 3, Rdbms basic, section 2, create and edit tables using wizard and SQL commands, part 4. Fine, in part 4, I will cover up how in Openoffice base we can use table wizard to create a table. Use wizard to create table. Fine. And in part 3 we had discussed how in Openoffice base we can create a table in design view. डिजाइन व्यू में कैसे टेबल बनाते हैं, दिस वी हैड डिस्कस्ड इन पार्ट 3. जब हम फ्रॉम स्क्रैच टेबल बनाते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, वी गिव एवरी डिटेल्स ऑफ द field, we give field names, we give field data types, we set their properties, and we make the table from scratch. We set a primary key, of course. If you have not watched this part, do watch it before watching part 4 so that you can compare the two ways of creating a table. So let's move into the video now, and I'll just show on page number 119 in your study material where this thing has been explained. So there are different ways to create a table, two of them being there in your course, of course. Create table in design view, that we have covered in part 3, and now part 4 we will learn how to use wizard to create table. Fine. So let's move to our database, school.odb. It's opened in front of us, and I have chosen tables button under database section, and this list these three things under task section. Create table in design view we have already done. Use wizard to create table we are going to do now. Fine. So if you read its description on the right hand side, it reads, choose from a selection of business and personal sample table samples which you customize to create a table. So what is going to happen, wizard आपको दो कैटेगरीज बिजनेस और पर्सनल के सैम्पल टेबल्स प्रोवाइड करेगा. उनमें से जो भी टेबल आप यूज करना चाहो यूज करके अपना नया टेबल बना सकते हो. यू कैन कस्टमाइज द अवेलेबल टेबल्स टू क्रिएट योर ओन टेबल. फाइन. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, use wizard to create table. Table wizard window has opened up. Now wizard facility always, like we did it for database creation also, we will be doing it for forms and query creation, reports creation also later on. So wizard basically is a facility that gives you that allows you to perform a task in step-by-step manner. So every step has some well-defined things to do. You carry out the step, move to the next step, carry out the step, move to the next step till you finish up with the thing. Fine. So there are 4 steps for table wizard. Select fields, set types and formats, set primary key, create table. Let's see what the first step has to say. First step reads, select fields for your table. This wizard helps you to create a table for your database. We all know table wizard hai. Obviously it is going to help us create a table for the database. After selecting a table category and a sample table, choose the fields you want to include in your table. You can include fields from more than one sample table. Now I'll explain it line by line. See, what are the things? Just observe. Category. Under category we have 2 things, business, personal. You can select one of them at a time. Now when you choose a category, all the tables in that category appear under this sample tables drop down list. See, these are the sample tables under business category. If you choose personal category, all the tables that belong to personal category appear in this sample tables drop down list. Fine. So first of all you have to be clear in your mind that which table under which category you wish to use. Fine. अब sample table जैसे ही आप select करोगे, like accounts table is presently selected under personal category. So this available fields box list, ठीक, list. There are 2 lists, available fields, selected fields. This available field means that Openoffice base ने आपको इस table में ये सारी fields दी हुई है. Fine. These are the available fields for the sample table that you have selected from this sample tables drop down list. Fine. It is going to change according to the selected sample table. Now the selected fields, what is step 1 reading? Select fields. That means out of these available fields, which fields you want in your table. So you have to select and move them to this selected fields list box which is presently empty. Fine. So in order to help you move fields from available fields to selected fields, these 4 buttons have been provided.
First button, which is having this caption of greater than symbol, is used to move, see the direction. Greater than का मतलब है direction will be from available to selected, and less than means the direction will be from selected to available. So अगर आपने कोई गलत field move कर लिया selected side, you can bring it back by using this less than set of buttons. ठीक है ना? Then what is the other difference? This is move one at a time. Single greater than, move one at a time. Select, move one at a time. And double greater than means move all from select available fields to selected fields. This is move all. Then less than means selected fields से available fields में one at a time आप move back करो. And double less than means move everything from the selected fields back to available fields. Fine. So these buttons will help you select the fields and to move them from available fields to selected fields. ठीक है. So let me see which table I would be making use of. I would be making use of this contacts table under business category, so that I can store the contacts of students' parents. So when I click on this contacts table, these are the available fields. Now I wish what I can do is, see, if I click on this double greater than, all the fields will move to the selected fields side. Fine. But I don't want all the fields, so I'll just move them back. Tick. And then I can just select from here and move it one at a time. So suppose I wish कि I want to take address. Okay. I'll select address, move on this greater than symbol. I want to know the city. Okay, I'll select city, move it. I want contact ID, select it, move it. I want first name, select it, move it. Last name, select it, move it. Then let's see what more do we require. We require mobile number, select it, move it. That's all. That's all I would be requiring to store the contact details of students' parents. Now you can make a, okay, these are like, I want, if I wish to change their order. Fine. I want that, okay, address should not be the first column, contact ID should be the first column in my table. So these two buttons will come into use. This is move up and move down. Select contact ID, click on this move up button till you bring it to a place where you want. The position of this column should be the first one in the table. So हम ऊपर ले आए. Let's select first name and click on this up arrow, move up arrow to make it the second column. You have to keep on clicking on this arrow till the field reaches its the position where you want it to be. Click on last name, move up and bring it under first name. ठीक? And then mobile number, you can bring it after last name. Just in case you want to bring it back, mobile number as the last column if you want to make, selected it, click on this move down arrow and drop it where you stop clicking on this move down arrow if the field has reached its correct position. So this is how we can, these are all the things that we have to perform in step 1, which is select fields. Once through with it, click on next button. अगर किसी भी stage पर आप step 2 पर आ गए हो, if you wish to make any changes, you can go back to the back button. Click on the back button and redo your step 1. Fine. So what does this step say? Step number 2 reads set types and formats. Set field types and formats. So all the fields that you selected in step 1 are appearing over here under selected fields. Fine. Just in case you want to delete any field, you can use this minus button. You want to add a new field, अभी कस्टमाइज अपनी तरफ से कोई फील्ड देना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस प्लस बटन. यू वांट टू चेंज द ऑर्डर, क्लिक ऑन दिस मूव अप एंड मूव डाउन buttons. Fine. What is there for each field? Let's see that now. For every selected field information, it comes on the right hand side. Fine. So contact ID is there. It is like field name, contact ID, data type integer, auto value, no entry required, no length 10. So a dedicated video on field properties, setting them, what do they mean, what do each of these things mean, auto value, enter required, length, that is going to come up in some time from now. But let's not focus on it right now and focus only on the table creation process. If you want to change the field name, you can type a new name over here. आप यहाँ पर न्यू नेम टाइप करके फील्ड नेम चेंज कर सकते हो. यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट द फील्ड, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. फाइन. एंड इफ से सपोज यू डोंट वांट मोबाइल नंबर, सिलेक्ट इट एंड रिमूव इट. फाइन. लेटर ऑन यू विश नहीं होना चाहिए था, ऐड करना है या कोई अपनी तरफ से फील्ड ऐड करनी है, यू कैन लाइक टाइप लाइक दैट. ओके, दिस इज गोइंग टू बी माई मोबाइल नंबर.
एंड ठीक है, डेटा उसका वैर लेते हैं, रीजन क्योंकि मोबाइल नंबर्स इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर सकता है. सो वी कैन चेंज द फील्ड इंफॉर्मेशन इन स्टेप नंबर 2, फील्ड फॉर्मेट इन स्टेप नंबर 2. After we are done with this, we click on next to move to step 3, which is a very important step. Set primary key. A primary key uniquely identifies each record in a database table. Primary keys ease the linking of information in separate tables, and it is recommended that you have a primary key in every table. Fine, because primary key we are talking about in Rdbms, where multiple tables will be there and they will be linked using a common field. Fine. So primary key may become a foreign key in another table in case we wish to join those two tables. So primary key honi chahiye to ensure record uniqueness and to ensure that linking of that table can be done with any other table if we require data from the two tables. Fine. So without a primary key, it will not be possible to enter data into this table. This I even demonstrated in design view कि अगर आप design view part 3 में भी मैंने आपको बताया था that if you do not set a primary key, Openoffice will not let you enter data into the table. Fine. So primary key के क्या क्या procedures हैं, टिक लगा हुआ है already. There are 3 ways. Fine. First is automatically add a primary key. ठीक है, अगर आप यही लेते हो तो वैसे ही आईडी कॉलम इंटीजर टाइप का क्रिएट हो जाएगा टेबल में. आप अपने टेबल की किसी पर्टिकुलर फील्ड को, जैसे हमने ये टेबल लिया, मैं कॉन्टैक्ट आईडी को प्राइमरी की बना सकती हूँ, बट स्टिल इफ आई डोंट वांट, आई कैन अलाउ ओपन ऑफिस टू ऐड अ प्राइमरी की. ऑटोमेटिकली वो आईडी कॉलम ऐड हो जाएगा. इफ आई वांट कि वो इंटीजर टाइप ना हो, मतलब ऑटो वैल्यूज ले, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेटेड वैल्यूज हो उस कॉलम में, यूजर एंटर ना करे, ऑटोमेटिकली जनरेटेड वैल्यूज आती चली जाएं, न्यूमेरिक वैल्यूज, तो आप ऑटो वैल्यू पर क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप इज यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की. यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना. अगर सपोज आपको कॉन्टैक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाना है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट आईडी सिलेक्ट कर लो. सिंपल प्राइमरी की बन रही है, एक कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हो. ऑटो वैल्यू आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो बच्चा. ऑटो वैल्यू क्या होती है? व्हेन योर फील्ड गेट्स यूनिक न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन इट्स ओन, जो ऑटो इंक्रीमेंट होती चली जाती है. ठीक है, जब फील्ड प्रॉपर्टीज आएंगी देन आई विल एक्सप्लेन इट. फाइन. दूसरा है, अगर आपको कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनानी है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से मान लो आप कॉन्टैक्ट आईडी को और फर्स्ट नेम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, तो एक एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव कर दो. फाइन. सो हमने सपोज कहा कि नहीं, वी विल यूज एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की, और हमने कहा कॉन्टैक्ट आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे. 3 प्रोसीजर्स आपको क्लियर हो गए. ऑटोमेटिकली ऐड में आईडी नाम का कॉलम इंटीजर डेटा टाइप का ऐड हो जाएगा. आप अपनी फील्ड्स के अलावा एक न्यू कॉलम बिगनिंग में ऐड हो जाएगा. अगर एग्जिस्टिंग में से सिंपल प्राइमरी चाहते हो, यहाँ से सिंगल कॉलम ऐड कर लो. एंड इफ यू वांट अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, तो जो भी आप कॉम्बिनेशन में चाहते हो उन कीज को यहाँ से सिलेक्ट करके इधर मूव कर लो. दिस इज गोइंग टू बिकम अ प्राइमरी की विच विल बी अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल फील्ड्स. किसी भी स्टेज पर आप ऑटो वैल्यू चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एंटर ना करो, बेस ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज, ऑटो वैल्यूज ऐड करे जो ऑटो इंक्रीमेंट होती चली जाए फॉर एवरी रिकॉर्ड, आप ऑटो वैल्यू ले लो. ठीक, ये करने के बाद बेटा स्टेप 3 ओवर होता है एंड वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. लास्ट स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है? व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल. आपको अपनी टेबल को क्या नाम देना है? अगर आप वही नाम रखना चाहते हो जो विजार्ड के थ्रू मिला है, तो लेट इट रिमेन द सेम. इफ यू वांट टू चेंज द नेम, आप यहाँ पर वो न्यू नेम एंटर कर सकते हो. देन इट सेज कांग्रेचुलेशंस, यू हैव एंटर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट योर टेबल. आपने सारे स्टेप्स की इंफॉर्मेशन को अच्छे से कवर कर लिया. व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड आ रहा है, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली. ठीक, तो आपका ये टेबल डेटा भी ओपन हो जाएगा. आप यहाँ रिकॉर्ड एंट्रीज कर सकते हो. नेक्स्ट इज मॉडिफाई द टेबल डिजाइन. स्टिल इफ यू वांट टू एडिट द टेबल डिजाइन, चूज दिस ऑप्शन. या क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल. अगर आप इस टेबल पर बेस्ड फॉर्म बनाना चाहते हो तो यू कैन चूज ऑप्शन नंबर 3. Fine. So we'll go by the default option, that is insert, by default selected option, which is insert data immediately. ठीक, इसके बाद and I'm keep retaining the name that OpenOffice based table wizard gave me and click on finish. Once you click on finish, see this contacts table in school database table data view open हो गया है और अब आप यहाँ पर record entry कर सकते हो. ठीक है ना? So you can see ये आप यहाँ 1 by 1 यू कैन एंटर रिकॉर्ड्स. और ये कॉन्टैक्ट टेबल आपने किसकी हेल्प से बनाया?
आपने इसे बिजनेस कैटेगरी के कॉन्टैक्ट्स टेबल की हेल्प से बनाया। ये यहाँ पर लिस्ट में भी आ गया है, डबल क्लिक करके देख लीजिए इसको, और ये आपका आ गया और आपने प्राइमरी की सेट की थी, दैट इज व्हाई इट इज अलाउइंग यू टू एंटर डेटा इनटू द टेबल, अदरवाइज ये डेटा एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट टेबल यूजिंग अ विजार्ड, जहां आपने सैंपल टेबल की हेल्प से उन्हें कस्टमाइज करके अपनी टेबल्स बनाए। ठीक, टेबल डिजाइन विंडो में यू वर डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच बाय टाइपिंग द फील्ड नेम्स एंड फील्ड टाइप्स। So I hope the difference is now clear, and do watch both the parts to have a stronger grasping of both these concepts. And after watching the video, do let me know by your valuable comments that how you felt after watching it. So till we meet again, children, happy learning. I'll be back with session 3 videos now, because with this video I have completed all the concepts of session 2. So till we meet again, happy learning, children. God bless you and take care. Bye bye.